So we are live on YouTube as well. तो बताइए कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया भैया। बढ़िया. Good. How is the preparation going on for IIT? नाइस चल रहा है। चल रहा है. बाकी लोग कैसा चल रहा है IIT? पता नहीं. पता नहीं. कुछ तो पता होगा. ओके, आउट ऑफ 10 कितना लगता है प्रिपरेशन में तुम लोग? 5, 4, 8, 9? 4. 4, 7. 5 ओके, 5. और people on YouTube, how is your preparation going out of 10? 2, 5, 7, 8, 9, 10. Anyone with full preparation? 10 ready for IIT? I'll start recording. Recording in progress. Akhil is here. Hi Akhil. Hi Ravi. भैया न्यू हेयर स्टाइल। Sorry, what happened? अखिल भैया का नया हेयर स्टाइल आ गया। नहीं कोई नया हेयर स्टाइल नहीं है, ऐसे ही बस आ गया। Good evening everyone. So today mainly our discussion will be about your preparation for IISER aptitude test. We have almost 1 week, right? Today is 26th. On 3rd we have the exam, and obviously very less time is remaining. Your stress will be increasing and all. How is the preparation going? What are the problems you're facing? What can we do, right? And what can you do now? Like abhi kya karna chahiye in this last 1 week? So all of those things we are going to discuss. Apart from that, Akhil, you want to add something? It's already time and we can start the session. We can start the And session. we will not make it very long. We will be very concise and to the point. And we will try, if this gets ended by 30 minutes or 40 minutes, it will be totally good for all of you as well. You can go and start preparing, and there will be classes from 8 o'clock and 9 o'clock, right? So for that. Okay, Akhil, up to you. Yeah, so today your admit card is out. So you have got all the exam fee. The next, today you also have a mock test, and just like this, after 6 days, you will have another, just like a mock test, your final IIT exams. So the best opportunity for all of you, whether you have did well in the next exam or you have not perform in the next exam. So it's totally fine. Let's leave that part of next, and for all those who have given the next exam, you have the best opportunity to get into the IISERs, the premier research institutes, and they will be waiting for you. So just prepare, just revise all the things well in this remaining 6-7 days, and solve all the PYQ exams. We have already conducted 3 PYQ exams, 2 more will be conducted. So do attempt all the PYQ exams. This should be your utmost priority at this time, and also revise the most important chapters that we have suggested to you. So revision and a little bit of question solving. Like this, you have to proceed in the last moment. Do not jump into totally new things and waste your time
You cannot afford understanding a topic entire day. All you have to do is revise in this last moment of your preparation. Yeah, Vivek. Yeah, I want to add some of the things that if you're facing any problem, obviously you can tell us in this session also. We'll see that, and always message us. So, how many of you have any of the PYQs left? Do you think that you have not done? Again, any of the PYQs left? Yeah, We have to yeah. contact? There are 2 PYQs left. They Two will be PYQs. conducted through the schedule. Yeah, Okay. 3 have been conducted, 2 are left. And all the solutions you are already getting right through the PYQs and CBT mode. Now, what are the problems you are all facing? Like, कहाँ दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? Anyone can unmute and just say. May I tell? हाँ बोलो. Actually, the first problem is like day before yesterday my JEE got over. Then there's means all the exams are clustered together. That is the main problem. Means like BITSAT is also there. Then IAT is there. Then means actually I'm finding it difficult to somehow coordinate all these together. When is your BITSAT? It's on 5th, I guess. Yeah. Okay. Yeah, so for all the people who have their JEE mains, from talking to you guys, like mostly your JEE mains is getting over by 28th for most of you. So yeah, we have already discussed whatever PCM you will be doing, it will be helpful in your JEE mains also. Now, so whatever remaining is your B thing, biology. So prioritize biology for after your JEE mains more than any other subject. If you if you were having flow in biology and you want to excel, you want to score more marks in biology, that is very easy to do. And yeah, we will be also making a video for what to do in this last week. Yeah, so for all the PCM folks, you can do, if you are comfortable, you can do a little bit of biology. You can start like watching any one shot, or I will suggest you to watch a one shot from YouTube. If you are not in our course, if you are in our course, attend the revision class, watch the recordings of the revision classes that Akash Bhaiya have taken for ecology thing. Like for ecology, I do not think any prerequisite is needed because you all study ecology in your 9th, 10th standard. It is like scaled better, little bit up. So you can go through ecology, like the first 2 chapters of, there are 4 chapters of ecology. You can at least do the first 2 chapters of ecology. And yeah, you can also do biomolecules. That is common for you in chemistry also. Just only enzymes we will not be doing in chemistry. So do that part from biology. And yeah, if whatever, just go through the biology syllabus and whatever we have told you important chapter, and see what interests you the most. So any for any PCM folk, you want to score a little bit in biology, I will suggest you to go through the important chapter video and do little bit of biology that you feel like you can do. Don't put extra pressure. And yeah, whatever you are comfortable doing in the last moment, only do that thing. And for all the PCB guys, you don't have any exams at this moment, so relax and do mathematics only when you feel like you can, like investing that much time, you are getting the results. If you are stuck at if math is totally new for you, you have not done anything, and you suddenly jump into math. If you are finding by doing 1-2 problems, you are wasting your entire day. Don't do math. Just getting into the IISER Pune, it will be the hurdle for anyone who is having PCM or PCB. Rest of the IISERs you can easily get only from PCB also. Only from 3 subjects you can get, till IISER Kolkata if you do well. Yeah. Pune is not impossible, but it is difficult than any other. One more question I had to ask. May I ask? Yeah, sure. Go ahead.
Yeah, means in the next that answer key came out. After that, I analyzed one thing, that means in the single correct questions in which 2.5 marks were there my accuracy was good. But in the more than one correct type questions where 4 marks was there, means in the most of the cases like this happened that 3 options were correct and I marked 2 out of them. You So need not to effectively worry I got. about that. Nah. You need not to worry about that. That happens for everyone who is giving NEST. Your That is accuracy. expected. And you don't have to bother about test anymore. Ho gaya. You don't have to worry about it. In IIT, there will not be multiple option correct questions. You don't need to worry about it. And on average, if you get even 2 correct in NEST, in multiple option, that is a lot. Most people like struggle to get even 1. So don't worry about it. So like it's absolutely pointless. Those are very difficult questions. There is no point thinking कि हाँ ये नहीं हो रहा तो मेरे से क्या होगा. वो होने लायक है. Okay. And yeah, related to what you said before this, see, all the exams being clustered together, yeah, I had said this before also, I'm repeating myself here, that you will not really be able to prepare for every individual exam separately. You will have to keep your general preparation to this level, that you will not need any significant amount of extra thing to prepare for NEST, IIT or any exam. General level को ही इतना अच्छा रखना है कि just by like अगर कभी भी if you are just caught in the middle of the road, तुम्हारे सर पे बंदूक रखी जाए और तुमको ऐसे बिठा दिया जाए कहीं भी कि अब ये पेपर करो, नहीं अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो मार डालो, तब भी तुम निकल जाओ. That should be your spirit, right? Your general preparation should be on that level, that you don't have to like take last moment preparation. Because last moment preparation you cannot do that much. No, actually, Aditya Bhaiya, actually, I was asking like for BITSET we have to do English and logical reasoning also apart from PCM. That is why. That is the main. अब देखो, you have to like prioritize, right? वो तो as usual. जो सब सारे subjects तुम PCM, physics and chemistry are common in everything, right? So you will obviously focus on that. Maths is also common, so you will also focus on that. Biology you just need for IIT, so you will focus a bit less. English and logical reasoning you just need for BITSET. And if you get into IISERs, obviously you're not going to go to BITS, right? Yeah. So sure. you won't worry too much about it. And anyway, it's not that difficult for BITS and BITSET. I know it's not that difficult. English and logical reasoning. You don't need to like study separately for it. Eliminate the things that you don't need to study. Right now, you only study what you have to study, because you cannot afford to study something that is not necessary for you at this moment. जो हर किसी में काम आएगा वो अच्छे से सिक्योर कर लो, then focus on the biology, which is like only for IIT, and so. Sure. Okay, bhaiya. Yeah. Thanks, sir. Okay. Any other question, people? Bhaiya, how to avoid negative marks? अभी तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं क्या बहुत ज़्यादा? This actually happens in JEE mains, like negative marks बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें. और IIT का? IIT में उतना तो नहीं हो रहा है. अच्छा, JEE मेंस Yeah, में भी JEE questions are designed to fool you. IIT में उतना नहीं होता. JEE questions are designed to fool you. एक ऑप्शन रहेगा उसमें कि which if you take the wrong approach at some critical point, then you will get to that answer. And like mains में उतना नहीं in advance, so they do this in every question. Mains में they don't do it in every question, but it's still like काफी में होता है. So yeah, you can do anything to avoid that, other than to like, okay, I went wrong here. Analyze करो कि कहाँ गलती हुई. कि okay, because of this critical error, I went on this wrong route while solving this question and I got the wrong answer and I marked this option, I got negative marks. Because if your answer does not match with any of the options, you are just going to skip the question. If it matches, that is more dangerous. If it matches and you get the wrong answer, it very likely means either you made a mistake that the examiner predicted you will make. So, tum phas gaye. If you make some uncommon mistake, that you still will realize that you made a mistake, because the number of options is limited, right? You can only have 3 wrong options in IIT and in main both. हाँ, अगर numerical type है तो it becomes a bit more difficult. लेकिन numerical में negative तो नहीं रहता ना. Yes. So you have to identify what the critical points are in every question, where the examiner expects you to make a mistake. Yeah.
So there you have to be more careful. think that way actually a bit. Not just in JEE or NEET, right? It's in IAT, NEST, everywhere. Actually, you need to Everywhere. think in terms of examiner. We all just think like कि हमको ये question करना है, जल्दी जल्दी करना है बस. That's it. You think about, right? The examiner knows you are going to make a mistake in changing the limit somewhere. कहाँ plus की जगह minus हो जाएगा. तुमको examiner has done this for many years. He knows, he or she knows कि हाँ बच्चा यहाँ पे गलती करेगा. And then they are going to tell you to like they are going to ask you say 25 plus the value of this. Okay, and then while changing the limits, you will forget to like see कि हाँ कि the limits को हमने बाद में integral में interchange किया है, तो एक minus sign आएगा. You might forget that. Your answer will be like 27. The actual answer will be 23. How will you realize? They know that you will make this mistake. They are going to give options like 23, 24, 25, 27, something like this. कैसे करोगे तुम? See, There's no way of telling. when let's say I used to make question for your mock test, like original questions and all, then what I used to do is in chemistry, like I would write a reaction, right, and I would put the mechanism. Then the options which I would give would be one of the option will be very close to like by this logic this will be the answer, which will be wrong. Okay, I would try to put an exception there, and obviously I would have to mention it in the question, right? I would mention in the question that under this condition. See, what I used to do in chemistry making question, I would mention that under this condition which statement is true, let's say, or under this condition which will be the major product. Now everything then starts depending on under that condition. But when you read the question, when students do the question, they will just read the question and like a lot of you first of all not read properly under this particular condition, and they would just do the normal things which I will definitely put in the option, that without that condition what will be the product, and then under that condition let's say कि acidic medium में this will be, a basic medium में this will be, or some changes. So this is how we examiners make questions, or any examiner would make question. Yeah, even for maths I used to do the same thing. So think like one of the things you can do to avoid negative marking or your silly mistakes is actually to read the question and just underline that what is that condition under which, and always look for it. Okay, one of the things you can train yourself Read for. question carefully. हाँ, so like train yourself ऐसे जब भी question पढ़ो ना, just think कि यहाँ तो कुछ इसने गड़बड़ किया होगा एग्जामिनर ने, think like that. Okay, कुछ तो गड़बड़ होगा इस question में. Then if whenever there is see, always locate what is out of the ordinary. If you see a very standard question in IIT, yeah, it might come, but very often there will be one twist in the question always. तुमको बता दिया जाएगा. You will be told that at 1 atmosphere something, and then instead of giving you 273 Kelvin, they're going to change it to 373 Kelvin. Because you have memorized these type of questions so much, you're going to just read it as 273 and you're going to do everything, and your answer is going to match, and you're going to mark that, and you're going to get negative. You don't want that. तुमको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है. Always check कि हाँ, what my condition is. So examiner is thinking that you will assume 273 Kelvin somewhere, and then you will not realize, you will mark, and you will forget about it. So someone has written in the YouTube comment as well, Shreya Ramesh, it's confusing because you never know which question examiner is going to fool you, right? The thing is that you should, the way you do question is you should always be thinking that way. It's not for one question, okay? We are not saying that for you find out that which question examiner is trying to fool you. He is trying to fool you everywhere. They don't want you to get marks, right, easily. So even it is actually a skill of reading question. What I'm saying is, it is a skill of reading question. It is skill of identifying that which option gets eliminated under this condition. So to simplify it, we have told a lot of things. To simplify, one of the things you can do is read question properly and underline that it is actually asking under this particular condition. Another thing will be actually the practice. So when you read a question, one of the things, I will not attempt a question until I know that this I will do and I will get this, and then I will put that answer, that value to this, and as a result I will get the answer.
So if I don't know this, see, I am reading a question. Let's say 1, 2, 3, 4, some question I read, and they are asking this. You have to find out this, or the correct value of G will be, or the correct value of, let's say the correct product will be. So while reading the question, and if not exactly while reading question, within 15 seconds, actually it comes to my mind, ki, acha, if I do this, then I will get this. I'll put this thing to here, and as a result, I'll get this answer. Then only I'll attempt the question. If I'm not getting Before this, trying I will. to solve the question, make sure you know the method to solve the question. हाँ. Otherwise, wasting time on that question is of no use. Otherwise, you're बाद basically में देखना, at experimenting, the end, right? if you have time, हाँ. then you can experiment. When you have time at the end. And this is But why. if you don't Yeah, bother. this is why I tell you that if you're not getting, let's say something is stuck there, right? Let's say at you are like, I know from here to you can get here, and this will give you this value, and this will give you the answer. But you forgot that how to get that value. So what to do that point of time? Just leave it. And that is where the round 2 comes. So by the time you will be doing other questions, suddenly something will come to your mind and you will get remembered that, okay, this is what to do to get this value, and then you will put to get answer. So then in round 2, you can come back and do the question. So the second thing is, have already, you have an idea that yes, this is how you will get answer. If you don't have answer, just leave the question. So how to avoid negative marking? So either do this when attempt the question only when you know it. How do you know that you know it? When the strategy already comes to your mind. And otherwise, just leave the question. If you leave the question, you're not going to get negative marks, right? Yeah. I hope, was that helpful or was it confusing? Yes, Bhaiya, I got it. Okay. हेलो हाँ बोलो. हेलो ये जो दोनों चीजें हैं, मतलब जो आदित्य रूप ने बोला या फिर जो विवेक ने बोला, ये चीजें ये अप्लाई करने के लिए पहले तुम लोग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर तुम लोग की नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इसका मतलब तुम एनालाइज करो कि क्या तुम लोगों के पास करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की, या फिर कुछ मगअप कर लिया है या कुछ फॉर्मूले याद कर लिए हैं कि ये फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा, वो फॉर्मूले से वो सॉल्व होगा. तो ऐसे नहीं करना है. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलो. और जैसा बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, एग्जामिनर को नहीं देख सकते हम लोग, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है. लेकिन अगर तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे पास, तो तुम लोग चाहे जो भी वो पूछे, तुम लोग उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो. जैसे कि अगर फिजिक्स में ही आता है, पुली वाला सिस्टम आ जाता है, तो उसमें ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं. अब वो बच्चे होते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं. लेकिन अगर फोर्स की और चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में. ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम लोग एक बार एनालाइज करो कि है या नहीं है जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं. ठीक है. ओके भैया. भैया इसी बारे में पूछना था, आपने जैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का टिप्स दिया, एक और चीज पूछना था. अगर सपोज मतलब ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस जैसे मेथड्स यूज करके अगर मैं एक मतलब 2 ऑप्शंस अगर एलिमिनेट कर दूं, तो उस केस में क्या रिस्क लेना चाहिए या फिर वहीं पर भी मतलब छोड़ देना चाहिए अगर कुछ Depends आगे on नहीं how बढ़ा? much risk you are willing to take ना. तो ये देखो, if you know 2 options are not correct, यस, तो सोच लो कि what are the odds कि तुम्हारा आंसर सही आना. प्रोबेबिलिटी यूज करो ना यार, मीन तो निकालना आता है एक डिस्ट्रीब्यूशन का. तो 50% हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा -1 आएगा या तो फिर 0 आएगा. So what do you want? Do you want 0? No, not 0, sorry. -1 or +3, right? Yeah. So, अब निकालो कितना Aditya, श्योर. what do you think? Like I actually saw a video of one of the YouTuber. He was saying that if you want to do a guess, then eliminate. If you have eliminated 2 options and just 2 are left, so probability of getting right becomes high. But actually, probability of getting wrong also becomes high. Yes. Right. Yeah. Both become Equally. 50-50. लेकिन expectation for 50-50 increases. लेकिन तुम्हारा 50-50 तो नहीं होगा. If you have no clue about 2 options, तब हाँ. Yes. He's Either right. you're going to get to +3 or a -1. So if you have no Yeah. clue, like you don't अपने know at all. अपने आप को बुरे किस्मत वाला ही समझो, छोड़ दो अगर दोनों में से क्लू नहीं है. 50-50 भी चांस है. नहीं, like on average, if you are taking a guess on many questions, then it will be better actually. कभी कभी रिस्क लेना अच्छा है, लेकिन बहुत कैलकुलेट करके लेना था. तो आई वोंट एडवाइस डूइंग इट. लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि इफ यू हैव अ हंच कि ये ऑप्शन है और 2 ऑप्शन तुमको पक्का पता नहीं है, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर, क्योंकि +3 -1 है तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो.
लेकिन ले ज्यादा नहीं, सकते हैं, संभल के that रहना। that basically actually your already prior knowledge, right? You already have your experience and knowledge of solving question. You know from this concept this is the most probably right answer. Then you Yes. might go for it. It is actually very personal question, so it actually depends on you. It will also या depend फिर ki how या much you have already got till now, how are you able to solve the paper. If you're not able to do exactly, anything, then तब then मारो this तुक्का, हाँ तब then you can do anything, because either way you're not going to cross the cutoff if you don't take the risk. hmm. But Then if you're why doing not well, increase your chances? but let's say you're doing You are well, doing right? well. Then better not take the If you're risk. doing well, then also you can take risk, अच्छा because either way cut off के नीचे तो जाओगे नहीं. If you're on the borderline, that's when where you need to be careful. That is Okay. like if you're doing too well, that is तुम्हारे like 120 मार्क्स आ चुके हैं, तो कुछ भी करो, you are not going to go below the cut. You're still going to get a good IISER. Yeah. Thank you. एक चीज और लाइक आई वुड लाइक टू ऐड कि बहुत से बच्चे जो लाइक पीसीएम है वो बायो के लिए और पीसीबी है वो मैथ के लिए क्या करते हैं कि जो हम बता रहे हैं यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स को, वो उनको अपना मेन प्लान बना लेते हैं उस सब्जेक्ट के लिए, वो पढ़ते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि हम अरे यार, आई एम टेलिंग ऑल दिस अबाउट लाइक योर मेन सब्जेक्ट इन योर लाइक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जहाँ पे तुमको आइडिया नहीं है, गलती से भी try to zero out that section. You want to only never get negatives in your extra section ever. Last time we were discussing about how was your, like many were toppers in our course. Yeah, so they told that they did 7 question, 8 question negative in biology. They were PCM, they did wild guesses in biology. So please don't do that. Yeah, focus on your where extra section can only help you. Risk लेना है, where you cannot calculate risk, never take risk. Where you have how much the risk is, you can still take risk sometimes. If you are like me, you can take a lot of risk. I take a lot of risk, but I'll never advise anyone to take a lot of risk. मेरे को आता है कैसे लेना है, सबको नहीं आता. That's a very personal decision to make. Even at times, even my marks have gone down significantly because of risk taking. It happens. संभल के खेलना होता है ये game. again, how many students generally give the IIT exam? About last year it was 40,000. So we can hope 50,000, 60,000 this year. 50-60K minimum. And there are 16,030-ish seats in IISER. Sorry, not 16,000. Sorry, 1,600. 1,734, something like that. Oh, this year it has increased. Nice. Last year it was around 1,634, I think. They have increased to 50. हाँ बोलो. भैया आई एम अ पीसीबी स्टूडेंट और मैंने मैथ्स को तो बिल्कुल टच नहीं करा है. एंड ऑल्सो नीट की जो प्रिपरेशन होती है उसमें मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो नहीं आते हैं. तो राइट नाउ मुझे जेई के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए या फिर मतलब आई बीन डूइंग दैट फॉर 2 weeks. पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? मैथ्स को Don't bother about math. मैथ्स को छूना मत. और बायो का लेवल वही है, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत है. तो तुम जेई क्यों जा रहे हो? सीधे हमारे पीवाईक्यूज और मतलब आईआईटी के पीवाईक्यूज और मॉक सारे हो गए तुम्हारे, तो पहले उनको कर लो. भैया 2-3 हो गए जो आप लोगों ने कराया है, बट वही है ना कि उतने प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस नहीं आता. केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर रही हूँ, मैथ्स तो बिल्कुल नहीं छेड़नी है. केमिस्ट्री फिजिक्स मॉक करो ना. मैथ्स डोंट टच. ओके, मैथ्स को टच मत करना. आईआईटी का करो, क्योंकि जेई एंड आईआईटी आर डिफरेंट फ्लेवर्स. हाँ, टेस्ट सिमिलर हो सकता है लेकिन फ्लेवर्स आर डिफरेंट. मुझे लगता है तो कि मतलब अगर नीट के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल भी लगभग वही रहता है. तो अगर तुम लोग का वहां पे अच्छे से प्रिपरेशन होता है, फिजिक्स का थोड़ा अप होता है, फिजिक्स का अप है, लेकिन बायो सेम है. केमिस्ट्री का थोड़ा मतलब फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा होता है. केमिस्ट्री बायो मुझे, हाँ केमिस्ट्री का भी मैंने देखा है, वो भी सिमिलर ही लेवल का रहता है. तो उतना घबराने की जरूरत नहीं अगर नीट के तुम लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा. ठीक है. ओके, व्हाट क्वेश्चन वाज इट? भैया ये जो केमिस्ट्री जो अरे जे मेंस के पेपर चल रहे हैं 2022 वाले, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो मतलब कुछ फायदा मिल सकता है ना? नुकसान नहीं कुछ करेगा तुमको. अगर नुकसान कभी किसी से नहीं होता. हाउ कैन यू मेक बेटर यूज ऑफ योर टाइम फॉर योर प्रायोरिटी, वो अब तुमको डिसाइड करना है.
whoever asked that question, देखो, attempt math first. अगर by chance you see a formula based question, do it immediately. Otherwise, don't bother about any questions in math. That's what I'll suggest. Whoever asked that question, the previous question. भैया प्रॉब्लम एक्चुअली केमिस्ट्री और फिजिक्स में आ रही है. मैंने आप लोग का रेस्क्यू कोर्स दिया था एंड बायो तो मेरी काफी बेटर है. इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी अच्छी है, बट इनऑर्गेनिक और फिजिक्स वगैरह में दिक्कत आ रही है. तो वो क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? और इनऑर्गेनिक इज सच अ हॉरिबल सब्जेक्ट ना. तुम कुछ भी कर लो, इवन इफ यू सॉल्व 1 million क्वेश्चन, यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट. ओके, AIR 1 से भी बात हुई है मेरी. इवन ही इज क्वाइट अनश्योर अबाउट हिज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं कर सकते तुम. AIR 1 as in like previous year JEE advanced AIR 1. विवेक भैया ट्रिगर्ड हो जाएंगे, ऐसा मत. क्या हुआ भैया? आप केमिस्ट्री के हो ना, तो आप शायद थोड़ा ट्रिगर्ड हो जाए. नहीं ट्रिगर क्यों, सही बोल रहा है वो. ऐसा नहीं, कोई इनऑर्गेनिक को पूरा 100% पढ़ ही नहीं सकता. मैं क्या बोलूंगा, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा. व्हाट यू कैन ट्राई इज, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, जो भी याद करने वाली चीज़ है, सोने से जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद, दैट शुड बी योर थिंग. सोने के जस्ट पहले, उठने के जस्ट बाद, एंड मेक नोट्स. ओके, the inorganic का best way is not the book. Okay, book has so many things there. See, ठीक है, like one chapter and so will many be things are outside the book also. हाँ, कोई let's say फायदा one, नहीं है. हाँ, so one जो भी chapter पढ़ो, लिख के पढ़ो, शायद कुछ याद रहता है. You can never like comprehend 100% of it. हाँ, so inorganic, no one can. So inorganic should never be, should always be read through your notes which you have made. And notes will not come from one place. Like they will come from NCERT, they will come from JD Lee or from lot of places, right? But fortunately for you, we have already given concise notes, right? We have not given you really long PDFs of any of the chapters. So, and the notes you have already made during the classes. That's it. उतने notes अच्छे से करो and वहीं से क्वेश्चन आता है. सी, the important reaction in nitrogen group, P block, nitrogen group. So important reaction will be important reaction, that is going to come somehow in one form or other, right? So some things I can tell you for P block, nitrogen and phosphorus are important. Those are like very very important actually in generally in any exam, so try to read them. And how to study in general inorganics, so before sleeping and after waking up, and from your notes you already make all the named reactions and all, or whatever the the reactions of different blocks and all, and make a sheet, make a diary, or whatever, 4 5 pages, maybe 10 pages, or every day. Even if you do just one page, then in 10 days it will be 10 pages. You don't have 10 days, then increase it to 2 days. So within 5 days you will be able to finish the 10 pages and you will be able to revise. Yeah. So I hope you got and it. See, inorganic is one thing that like it is so complicated that like inorganic is something you cannot really understand at this level. I had to like read much higher level book to get some idea in some chapter. So yeah, if your chemical bonding is strong, if your MOT is strong, then yeah, it will help a bit. It will give you some intuition of what is going on. Crystal field theory aata hai, then you'll understand solid state a bit better. Things like that. If you know the higher level topics, then it becomes easier. Lekin you don't have time for that. अभी मैं तो कह रहा हूँ कि विवेक भैया ने जो कहा है, just try your best कि memorize करने को जितना याद रहेगा. You cannot do anything about inorganic, unfortunately. कुछ नहीं कर सकते तुम. Okay. और जैसे नेक्स्ट में हुआ, फिजिक्स का लेवल यहाँ पे डिफिकल्ट आ सकता है, तो इसलिए प्रिपेयर रहना. हमने ऑलरेडी जितने ही मॉक्स कराए हैं उसमें फिजिक्स का लेवल बहुत ऊपर है. यहाँ तक कि केमिस्ट्री का भी लेवल काफी ऊपर है IIT एग्जाम से. तो फिजिक्स और ये मैथ का लेवल ऊपर आ सकता है फाइनल एग्जाम में भी, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना. बायो ज्यादा चांस है कि नहीं ऊपर आएगा, वो एकदम ट्रेंड है उनका, बायो ऐसे ही देते हैं लगभग. तो बायो में मजे हैं, केमिस्ट्री भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन लास्ट ईयर ही फिजिक्स उन्होंने किया था. फिजिक्स या मैथ दोनों में से दोनों का भी लेवल बढ़ सकता है, एक का भी लेवल बढ़ सकता है. तो ये पहले से अपने आप को प्रिपेयर अच्छे लेवल के लिए करके रखो. इजी आ गया तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है. और
जैसे क्वेश्चन बैंक का ही, तो जैसे किसी ने ये एकदम अभी जो 1-2 वीक के लिए कोर्स ही है उसको भी लिया होगा, उसमें भी 8 मॉक टेस्ट 6 मॉक टेस्ट तो है ही कम से कम। तो 15 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के एक मॉक में हो रहे हैं ना। ये लास्ट मोमेंट के लिए अगर तुमने नहीं किया है तो जैसे जेईई के क्वेश्चन करने से तो अच्छा ही है मॉक की डायरेक्ट करो ना। तो एक कंसाइड में वो आईआईटी के लिए ही बनाए गए हैं। थोड़ा लेवल अप है लेकिन वो उसके नंबर्स पे मत जाओ। मैं वही पहले ही तुम लोग को कह चुका हूँ, मॉक में जो नंबर आ रहे हैं वो तुम्हारी इवेल्युएशन के लिए नहीं है, वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए है, तुम्हारे लर्निंग के लिए है ज्यादा। पीवाईक्यूज में जो नंबर आ रहे हैं उनको थोड़ा सीरियसली लो कि अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे और थोड़ा करना है। एनालाइज उनको भी करो और क्या मिस्टेक्स हो रही वो अगले पीवाईक्यू में उससे अच्छा करने का सोचो। वो क्योंकि पीवाईक्यू का ही ट्रेंड आगे रिपीट होने के चांस हैं। 2021 का जैसा पेपर था हो सके वैसा ही लगभग पेपर आए। जैसे नेक्स्ट में ज्यादा कोई डिफिकल्ट मतलब डिफरेंस नहीं आया, ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर था जैसे 2021 का था। इस साल भी वैसे ही आ सकता है लगभग। तो बस अच्छे से रिवाइज करो। लास्ट मोमेंट का रिवीजन भी बहुत हेल्प करता है। कई चीजें जैसे इनऑर्गेनिक ही है तो भूल जाती हैं, तो वो लास्ट मोमेंट तक जैसे बायो ही फैक्ट वाली चीजें भूल जाती है, तुमको बार बार रिवाइज करते रहो और कोई शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। तो जितनी मेमोरी बेस्ड चीजें हैं लास्ट मोमेंट तक जितना रिवाइज करते रहोगे उतने सिनेप्सेस बनेंगे और उतना रिटेन रहेगा तो सही करके आ जाओगे। और कहीं ट्रिक व्रिक ऐसे मत भागो वो कुछ भी ज्यादा मतलब लास्ट मोमेंट में कुछ ज्यादा नया करना नहीं है। और ज्यादा कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बस यही रिवीजन करो, पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज हो जाए और क्वेश्चन करना है तो मॉक कर दो। बस एकदम सिंपल रखो, बहुत ज्यादा कुछ So स्ट्रेस लेना ही all नहीं। people in our crash courses and all, we are already giving you what to do. We already have a schedule, and we are more like a spoon feeding you than people in YouTube right now. In comments, some people are asking, "Abhi kya kare," right? So we are already giving you schedule. We are already giving you mock test and solution. And also, you keep doing that. For people on YouTube who are still confused what to do right now, first priority is previous year papers. Second priority is the mock test and using question to theory approach to revise your concepts. I hope you got it. कोई भी दिक्कत है एक फुल डिटेल में वीडियो है व्हाट इज द क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी. It's not to increase my watch time or something. I don't care about watch time. It is actually to help you in this remaining 6 days that what you should do right now. Okay, please check that. हेलो Anyone else? हेलो Any भैया other question? Yeah. हेलो भैया, मैं एक पीसीएम स्टूडेंट हूँ। तो मेरा बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स टाइप का चैप्टर हो गया है, लेकिन मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स है जिसमें वेटेज यार ज्यादा क्यों रहता है रहे वो हो सब यार? ठीक ठीक। ना 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 ना, मत करो भाई, तुम छोड़ो। बायो स्टूडेंट हो, तुमको बायो में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं नहीं? जो देखो जिन लोगों ने नेक्स्ट के लिए जो बायो की थी पीसीएम वाले, तुम उन्हीं को रिवाइज करके जाओ, बहुत ज्यादा नया मत करो कुछ भी। तुमको एनिमल मॉर्फोलॉजी के ढेर सारे, अरे वेटेज ज्यादा क्या होता है, 6-7 चैप्टर हैं तो उनसे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ओवरऑल वेटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं भैया आप लास्ट मोमेंट में, लास्ट ईयर मुझे कह रहे थे कि आप एनिमल फिजियोलॉजी को छोड़ रहे हो। तो इतने सारे चैप्टर है ना, तुम एक तो मैथ वाले हो, वो पूरा कोर बायोलॉजी है, उसमें जाओगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, तुमको टाइम कितना लगेगा उस हिसाब से रिजल्ट नहीं है। तुमको एक एज ए यूनिट में वो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन उसको ब्रेक करोगे तो देखोगे कितना टाइम वो लेगा कंप्लीट करने में। तुम अभी एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी नहीं कर सकते हो, पीसीएम वाले जितने भी हो। जेनेटिक्स थोड़ा वहाँ एप्टीट्यूड का काम आता है, पहले से नेक्स्ट के लिए भी करे हो उसको और रिवाइज कर सकते हो तो वो सही कर ले जाओगे। सेल बायोलॉजी ऐसे, इकोलॉजी भी मैंने इसलिए बोला कि उसमें कोई ज्यादा टाइम टेकिंग चीज नहीं है, वो लास्ट मिनट में किया जा सकता है। मैं जैसे लास्ट ईयर एक दो बच्चों का ऐसा फीडबैक था कि भैया मतलब क्यों एनिमल फिजियोलॉजी को नहीं इतना कहा, मतलब मैं मैथ वाला था मैं कर लेता, तो बहुत ज्यादा वेटेज था नहीं कर पाते, लेकिन नहीं कर पाते, नहीं. गारंटी से लिख के हाँ. दे रहा हूँ। So it is, because right now your aim is to get maximum output in whatever time you have left. Like per unit time you need to get marks, right? Per unit time you need to have strong concept. So तो सबसे अच्छा वही है, सबसे अच्छा वही है जो पहले तुमने किया है उसको और रिवाइज कर लो, जितने भी मैथ वाले हो। don't start anything new. If you have been following us, you have been following us since the, at least 1 or 2 months, and you have been practicing the important chapters we told, or we have been telling you the strategy,
then fine. You if you're a PCB, then you read mathematics. If you're a PCM, then you read bio. For PCM, you anyway read bio because that is important and easily you can score. At least ecology and biomolecules you can definitely read. Biomolecules is in chemistry also. But for PCB, wanting to start math, don't do it if you have not done yet. If you want to do, you can try set and relations, just those two chapters. Okay, I hope it is clear. Anyone else, any other problem? भैया हाँ, जैसे मैंने ना IIT के PYQs करे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन से पता लगा था कि कुछ जैसे टॉपिक्स वीक हैं, तो उसका जैसे आपने कहा क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच वो करा, मैंने थ्योरी पढ़ी, बट अब अगर उसको डाउट को क्लियर करना है कि वो टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से कर सकते हैं? no, then more mock tests will come, right? Then again you will see, when you will analyze it, you will see that did you actually repeat this mistake from the same concept. वो जो चैप्टर था, हर चैप्टर के हमने मटेरियल्स में भी तो एक्सरसाइजेस दे रखे हैं ना. तो अगर तुमने वो कोर्स, तुम्हारा कौन सा कोर्स है मुझे नहीं पता, लेकिन मटेरियल्स अगर है तो वहां से रिवीजन एक्सरसाइजेस भी करके देख सकते हो. एंड उसके अलावा apart from that, after 2-3 days you attempt the same question again. That will help you. Okay, Kamal, unmute and ask. भैया कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉनिक सेक्शंस से मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, तो अभी दोनों में से कौन से चैप्टर से मेरे को ज्यादा रिवाइज करना चाहिए? मतलब अगर एक को छोड़ सके तो किसको? I'm not sure. कॉम्प्लेक्स नंबर्स करोगे तो अभी मैं कह सकता हूँ कि लाइक सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर अ बिट इजियर, बट वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते. लेकिन कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, बट इट्स लाइक relatively difficult chapter. मेरा weakest chapter था, my own admission. Complex numbers relatively strong था मेरा. So yeah, conic sections is pretty difficult, but if you can do it, it will help you score well. Around 4 pages की एक formula sheet होती है. पूरा अगर याद कर, then it will help you a lot. So not just like memorize it, memorize it and apply it. Don't know, of course. I used to forget all those things. So what should you do? Like either leave both of them, maybe focus on other important chapters, or choose one of these two, or maybe both. You can either take the easy way where you will where usually complex numbers I think questions come aate hain in IIT at least, but like still quite a like 2-3 questions come आ जाता है. और कोनिक से anyway अगर आएगा तो like even if it comes from conic, I think it will come from very simple thing कि after you find out the tangent and then you put it in some formula and all and you get the answer. So simple है, but tangent का formula इतने सारे formula. So you understand the derivation and all. So I don't know what थोड़ा like difficult होगा. You have to make a choice. Either you take the easier and possibly less scoring one, or take the difficult, more scoring, possibly one. I would say take the easier one. Complex numbers ही पढ़ो. अभी complex कर लो. That's a safe bet. And if you already think कि conic तुमको ज़्यादा समझ में आता है तो कर लो. It's up to you then. अगर तुमको problem नहीं हो रही है. सोच लो. अब ये तुमको limits generally is important, right? Someone has asked. Okay, someone has asked on YouTube that for people who have not done very good in NEST and have also not prepared much in IAT, and there might be a lot of people among you, right? So what can you do now? First of all, stop worrying and doing, wasting your time in this. That is not going to help you, and because that is ultimately waste of time, right? So forget about results now. Work on, your actions. Result, forget about them. If you think more about results, then you will be more stressed, and then as a result you don't want to study, then you will be stressed and you will not be able to study, and there will be a loop. So get out of that loop first of all. Second, as we have been telling you, previous year papers, mock test, question to theory approach. That's it. This is the formula. This is SciAstra. This is the astra you have. Okay, Brahmastra. This is the Brahmastra you have. Previous year papers, mock test, question to theory approach. Don't start anything new. Revise continuously. Focus on the important chapters only. Don't focus on full syllabus. Yeah. Next. And yeah, I see many questions in chat. Like
यार अगर if you want to ask question please ask like unmute and ask you because it's very difficult to keep track of chat ना. भैया कार्बोनिल कंपाउंड्स मैंने एनसीईआरटी से ही की थी, मतलब उसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाया था, तो उसको अभी कैसे रिवाइज करना चाहिए? नोट्स है ना तुम्हारे पास हमारे? नहीं सर। नहीं है? कौन से कोर्स में हो तुम? मॉक टेस्ट सीरीज आईआईटी। ओके, सो एनसीईआरटी विल बी गुड इनफ, बट सारे carbonyl is important. Okay, carbonyl compound is important. So carbonyl compound, so what? चैप्टर भी ऐसा है कि you cannot just skip it. मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? NCERT will be, I think, good enough, useful. But if you want to do anything extra in that chapter, it's always better. So भैया कार्बोनिल ऐसा चैप्टर है कि वहाँ पे NCERT is probably not enough. एक बार क्लेडन पढ़ के देख लो. क्लेडन कार्बोनिल is like what? Around 30 pages. नहीं पर नहीं कर पाएंगे, एक हफ्ते में नहीं कर पाए, उसका दिमाग घूम जाएगा क्लेडन देखेगा तो. उसके लिए ऑलरेडी बेसिक्स वो फर्स्ट चैप्टर चाहिए, पढ़ना है. नहीं वो फर्स्ट चैप्टर चाहिए क्लेडन के लिए, वो कार्बोनिल बहुत आगे आता है. तो जो भी तुम कर सकते हो यूट्यूब से, जो भी वीडियोस वगैरह होते हैं, जितना कर पाओ कार्बोनिल के लिए उतना अच्छा है. आई थिंक रिएक्शन मैकेनिज्म्स में मतलब समझने में मुश्किल आएगी ना? ना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, देयर इज नो पॉइंट कि तुम रिएक्शन रट लियो अगर तुमको मैकेनिज्म नहीं आता, तो यू बेटर अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. सी द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द मॉक टेस्ट, दैट विल हेल्प यू एंड द प्रीवियस ईयर पेपर्स. अभी टाइम भी नहीं है कि तुम पूरा बैठ के क्लेडन पढ़ लो, क्योंकि उधर से मैकेनिज्म बहुत क्लियर हो जाता है, लेकिन टाइम नहीं है, पहले बताना होता है यार ये सब. ओके, एनीवन एल्स? जस्ट अनम्यूट एंड आस्क. कार्बोनिल कंपाउंड रिवीजन के लिए हम ये कर सकते हैं कि लाइक जो पीवाईक्यू जो मॉक्स में कार्बोनिल कंपाउंड के क्वेश्चंस है उसे प्रैक्टिस कर ले और उससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत थ्योरी वो कर ले. हाँ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्वेश्चन टू थियरी अप्रोच, राइट? कि तुमने क्वेश्चन में देखा कि ये ज़्यादा आ रहा है या इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम उसका थ्योरी जाके देखो. दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल. पीवाईक्यूज आर द अल्टीमेट. देखो पीवाईक्यू लाइक मेरा जो वो एनालिसिस के नहीं हो, उतना नहीं होता. मॉक्स आर फॉर लाइक हाँ, यू डू चैलेंजिंग क्वेश्चंस, यू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हो सकती है, यू फिक्स इट एंड देन यू कीप इम्प्रूविंग, राइट? पीवाईक्यूज आर फॉर एग्जामिनेशन कि हाँ कितना अच्छे से पढ़ाई हुआ है. द टू सर्व डिफरेंट पर्पसेस. अब तुमको सोचना कि यहाँ पे तुम किसका करोगे. यू वांट टू चेक कि हाउ मच यू हैव डन और यू वांट टू इंप्रूव राइट नाउ. भैया फिजिकल केमिस्ट्री 11th का ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 12th का? फिजिकल में आई वुड से थर्मोडायनामिक, प्रेशर, वॉल्यूम. अरे बता रखा है ना, इट डजंट मैटर 11th या 12th. वी हैव टोल्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? सम आर इंपॉर्टेंट इन 11th, सम आर इन 12th. तो उसको देखो ना, ऑलरेडी डिटेल्ड एनालिसिस पीडीएफ है ऐप में और वीडियो भी है. वीडियो देख लो यार. लाइक आई वुड से वो गैसेस, गैस थ्योरी है. हाँ, इट्स अ मिक्स. लाइक एक दो 11th के इंपॉर्टेंट है और बाकी एक दो 12th के भी इंपॉर्टेंट है, सब देख लो. थर्मोडायनामिक गैसेस एंड सॉल्यूशन. क्या 12th में तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन ऑनेस्टली नहीं केमिकल काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और व्हाट एल्स. ऐसे तीन चैप्टर्स आई वुड से व्हिच आर लाइक एसेंशियल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स एंड गैस लॉ. वो तो पता ही है, ये तीन करना ही है. देन आई वुड से सॉल्यूशंस करो, कोलॉइड्स करो, ये सब करो. वहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है. उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल के मिक्स से एक आ सकता है. एंड देन आई कंसीडर दैट एज कंप्लीट सेपरेट कैटेगरी. केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज लाइक इंडिस्पेंसिबल टू केमिस्ट्री इन जनरल. हाँ भैया फिजिकल में मतलब कैलकुलेशन में बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम आता है, मतलब अप्रोच ढूंढने में मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आता है फिजिकल में. फिजिकल केमिस्ट्री में कंसंट्रेशंस में वगैरह, और या फिर इक्विलिब्रियम की वैल्यूज होती है, या फिर पीके वगैरह जो होता है एसिडिक बेसिक, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है. क्या हो गया? प्रॉब्लम उसके लिए क्या कर सकते हैं?
प्रॉब्लम कहाँ है? I think Calculator- problem नहीं, I think concentration terms, normality, molarity, then equilibrium का हाँ इधर जो हाँ होते हैं हाँ ना, उसमें तो first of all your concept of molarity, normality, gram equivalent and all these Stoichiometry things are not बहुत clear. clear होना पड़ेगा. हाँ, those things are Stoichiometry not has to clear. be crystal clear. Hmm. I remember my stoichiometry was weak. Ionic equilibrium में जाके इतना करने के बाद I finally realized कि no, it's not going to work like this. फिर I like went back and fixed my stoichiometry, फिर जाके मैं ये क्वेश्चन कर पाता. It's an extremely like impossible thing. हाँ, और always कैलकुलेशन करते वक्त यूनिट्स लिखना. तुम लिखोगे 1 1, एक कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में, एक कंसंट्रेशन मोलारिटी में, गए मर गए वहीं पे खत्म. हमेशा यूनिट के साथ लिखना. दैट इज लाइक फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई एम सेइंग. देन इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ एरर बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. कितनी बार ऐसा मैं ऐसे लाइक बच गया, तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है. क्या रियलाइज वेट, ये यूनिट से कंपैटिबल है नहीं, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ. हेलो भैया, मेरा जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएफ ब्लॉक, ये सब अच्छे से किया हुआ है, लेकिन जो पी ब्लॉक है उसमें बहुत दिक्कत आता है. तो पी ब्लॉक क्या फिर से मैं पढूं या सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक ये सब रिवाइज करूं? कोऑर्डिनेशन, डीएफ, ये दोनों, ये तीन क्लियर है. हाँ, ये पूरा क्लियर है, Okay, लेकिन great. पी ब्लॉक में दिक्कत आता है. पी ब्लॉक बाकी है. पी तो I ब्लॉक would say से P आई में हो वुड ना. से ग्रुप 15 16 कर दो. हाँ, 15-16 कर लो. नहीं, पी में अच्छा, आ जाओ. ठीक है. अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, Right. सी वन क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी ब्लॉक इज गारंटीड मैं बोल रहा हूँ ऐसा. ठीक है, मैंने पेपर नहीं बनाया बट बोल रहा हूँ. अगर वो ऑलरेडी क्लियर है तो पी ब्लॉक में आ जाओ, क्योंकि पूरा ब्लॉक में क्वेश्चन अगेन दैट इज अ बिट इम्पोर्टेंट. नाइट्रोजन और वो 15-16 दोनों इम्पोर्टेंट है. तो अगर कर सकते हो तो कर लो, ऐसा नहीं है. उसके इजी टॉपिक्स एक्चुअली में उठाने चाहिए, क्योंकि जैसे कि वो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, IF7 का स्ट्रक्चर, PF6 का स्ट्रक्चर, वो इजी है. वो तुम लोगों ने इसमें भी पढ़ा होगा अपने जो शुरुआत वाला हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सी एसिड यही आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला. वही. या इनफैक्ट बैक बॉन्डिंग थोड़ा आइडिया रखना. एक्चुअली एनसीईआरटी वुड बी गुड इनफ फॉर दैट. एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए टर्म 1 के लिए पढ़ा है. पिछले 4-5 महीने कुछ नहीं पढ़ा. बोर्ड के लिए पढ़ा था टर्म 1 के लिए. 3-4 महीने कुछ नहीं पढ़े हो, अभी तो पढ़ सकते हो ना. अभी एक हफ्ता है. ठीक है, जस्ट रेफर टू द एनसीईआरटी. बहुत कंसाइज में एनसीईआरटी में 4-5 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज हर लाइन इम्पोर्टेंट है उधर, तो और कुछ टेबल्स भी इम्पोर्टेंट है, तो वो कर लेना बस. कौन से चैप्टर की बात कर रहे थे? पी ब्लॉक. अच्छा, कोई भी इनऑर्गेनिक का चीज ना, एनसीईआरटी वुड बी मच बेटर राइट नाउ देन एनी अदर रेफरेंस बुक और अवर नोट्स. डोंट एवर अभी रेफरेंस बुक गलती से बननी. आइदर आवर नोट्स इफ यू हैव एक्सेस टू दोस, और एनसीईआरटी, और इफ यू हैव if you are enrolled in some other coaching which has good inorganic notes, तो ठीक है, वो भी कर सकते हो. You don't need the maximum amount of information, you need maximum amount of marks. तुमको जितना कम इंफॉर्मेशन पढ़ के जितना ज्यादा मार्क्स आ सके उतना अच्छा है. That's why I'm telling you, group 13 compounds of boron, orthoboric acid, metaboric, बस ये दो खत्म, और कुछ नहीं आएगा. इधर क्या कोबाल्ट का कलर ब्लू है, ये सब याद रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला. ग्रुप 14 में कार्बन का कैटिनेशन, वो सब तो ऑर्गेनिक में कवर होगा. सिलिकॉन का नेटवर्क सिलिकेट, ये 2-3 टॉपिक्स है, बहुत हार्डली कुछ आता है. 15-16 इज स्टिल अ बिट मोर, ये थोड़ा पढ़ लो. 17 ऑक्सी एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब, और कुछ नहीं. और ग्रुप 18 इफ यू स्टिल लाइक, इफ एवर एनीथिंग कम्स फ्रॉम दैट, जेनॉन का वो एक्सीएस, वो जियोमेट्री याद रखो, और कुछ नहीं. कभी कुछ नहीं आता उसके अलावा, आएगा भी नहीं. इसमें तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर बहुत हेल्प करेगा. अगर तुमने वो पढ़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे बहुत हेल्प मिल जाएगी तुमको, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये वहाँ पे ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशन जो है, उसके केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग वीबीटी थ्योरी, वीएससीपीआर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर साल आता है. कई सारे चैप्टर्स हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ रहने ही दीजिए. सारे इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म, एमओटी के बिना तो होगा नहीं. कुछ भी हो जाए, यू नीड दीज थ्योरीज टू डू लाइक एनी पी ब्लॉक एंड लाइक डेल्टा बॉन्ड्स, न्यू बॉन्ड्स, ये तो लाइक आता ही है कोऑर्डिनेशन में, बट दैट इज लाइक अ बिट मोर एडवांस स्टफ. हेलो सर.
Ask. Sir, actually, I was preparing for JEE for the past few months. My PCM is fine, but in bio, a few concepts are not that clear, like plant physio and all. I'm good at animal physio, but plant physio, I feel it's a bit tough. So what will Akhil I and do? Akash. Yeah, So that you are I was. enrolled in our course or not? Yeah, I have enrolled. Are you attending the classes? I don't have live classes right now. I couldn't see that. Which course you are in? That everything course. Yeah, everything course does not have the live class. Okay, so what do I do for those few concepts? Have you studied these units like plant physio, animal physio before? Yeah. I'm good at animal physio. I am a Mhm. bio student, but I'm not good at plant physio. So what do I do about those? If And you are not getting biomolecules. the access of our classes, then you can surely go to YouTube also. So Okay. go to the YouTube, see one good video, get an idea that what's actually the basic concept behind all these processes, and then go to NCERT, read it thoroughly. And she उसके also बाद हो have जाएगा. our course access like ये हमारा materials, स्टडी मटेरियल है ना ऑलरेडी आई study थिंक. materials and all. So after that, go to the short notes and all what we have made that is in the course. Yeah, and like for the plant physiology, I will not suggest you to read it and leave the plant physio in it. Slightly animal physio is easier than the plant physio, and you are a PCM. So if you have done it previously, do it like the animal physio unit and do those chapters only which you feel like in the remaining 6 days you can do. Okay, sir. So and Yeah. in organic chemistry part, like can we study one chapter, because in one chapter all the reactions, all the mechanism is covered. So basically you don't have to cover all the chapters, right? For example, by hydrocarbons, I can cover many concepts from many chapters in organic, right? Organic chemistry is totally linked now. So if you know what are the basic mechanisms of the reaction, then you can always apply it and get answers. जैसे किसी ने पूछा कि कार्बोनिल केमिस्ट्री मुझे करनी है, तो कार्बोनिल केमिस्ट्री हमें अगर पता है कि ये किस टाइप की है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और हमें पता है कि व्हाट आर द वेरियस रिएजेंट्स व्हिच आर बीइंग एडेड, तो हम हमेशा ही उसको अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं. So if you have basic understanding, you know how to apply it, then it's good. No, I did not get ki leave other chapters and just do one chapters because everything is in one chapter. I don't think that's true, right? In I'm not hydrocarbon, leaving, but I feel like many concepts are covered. that will always be there. एक मिनट मेरा फोन गिर गया. Sorry. Yeah, but like thing is, you कर सकते हो, skip कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. But this should not become a case of I don't know that I don't know this topic. तुमको कोई आइडिया नहीं है कि ये टॉपिक एग्जिस्ट करता है. No, ये ना हो जाएगा. what I would say is organic में क्या करना है, important chapters बताए ना organic में, like वो जो electronic effects, one question guaranteed from there almost there. And similarly carbonyl compounds, one of the questions most probably very more than 99% chance will be there. Then what other topics in SN1 SN2 from haloalkanes and all, that is very important. So focus on this. You don't need to worry ki ye chapter ya ye chapter ya ye. It will be more specifically topic wise. So just do that. Yeah. And don't do one chapter and leave others. No, that's not how it works. Organic, everything organic is important. Okay. भैया Am I audible? Hello? और ऑर्गेनिक में भैया एनसीईआरटी में कुछ बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे थे, केमिकल इक्वेशन जिनके मतलब मैकेनिज्म्स नहीं लिखे हुए थे, लेकिन मतलब कोचिंग नोट्स में उनके भी मैकेनिज्म्स बताए गए थे. तो वो एनसीईआरटी के केमिकल इक्वेशंस के मैकेनिज्म्स मतलब दोबारा से Mechanism is always important, I say. Like I don't think there is like beat any trivial, कितना भी छोटा मोटा रिएक्शन हो ना, mechanism is always important क्योंकि that reaction will become a part of any big reaction, and in that big reaction if you don't know how this thing is happening, then it will be difficult. So no matter what reaction it is, you must know the mechanism. सारे एनसीईआरटी में जितने मैकेनिज्म्स आए ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के, उन सब के सी ऐसा नहीं है कि इनके मैकेनिज्म आ गए तो आगे के मैकेनिज्म नहीं होंगे. इट विल मोर हैपन, इट विल बी मोर लाइक कि तुमको एज यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट 10-20 मैकेनिज्म्स, रेस्ट coming 40 mechanisms will be very easy for you. It will be like that. It's not that you have to read 60 mechanism. Are you getting it?
ऑर्गेनिक में अगर तुम लोग मैकेनिज्म्स नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग ये पूछो कि उसके भी मैकेनिज्म याद करने हैं, इसका मतलब तुम लोग मैकेनिज्म याद कर रहे हो। मैकेनिज्म याद नहीं करने हैं, मैकेनिज्म समझने हैं, उसको अप्लाई करना है। तो मैकेनिज्म के बिना तो ऑर्गेनिक है ही नहीं, ठीक है। तो मैकेनिज्म तो तुम लोग को समझना ही है, उसको अप्लाई करके तुम लोग को इक्वेशन बनानी है, क्योंकि वहां पे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन वो पूछ लिया है कि ये कौन सी रिएक्शन है, बाकी क्वेश्चन तो तुम्हारे मैकेनिज्म पे ही बेस जाएंगे ना। तो फिर तुम लोग उसको याद नहीं करो, and then you need, as Akash said, you don't need to memorize. If you're memorizing, then you're not actually understanding the mechanism. You have to understand every mechanism. And it will practice. It will come with practice. And you cannot understand mechanism just by reading and saying, okay, this is how it happens. You need to write it by yourself by closing the book. Okay, so do that. Not just that, you should be able to close your eyes and see it in your head. Because you have around in class 11 and 12 combined, you will have around 15 to 20 mechanisms max, fundamental mechanisms, SE2 mechanism, SE1 mechanism, SE1 mechanism, and all that electronic effects. You'll have to account for everything. SNI, all the mechanisms included, you are going to have around 15 to 20. If you have complete mastery of those, you don't need to study any other chapter for organicals. You will be getting the right answers to every question without even like knowing कि हाँ ये ऐसे होता है, because you can figure out कि ये कैसे होता है, because you are a master in all forms of mechanism, क्योंकि fundamentally everything is built from those mechanisms only. अब वो तुमको अब उतना तो कोई कर नहीं पाता, but as much as you can कि हाँ I can understand the mechanism, I can just tell that the reaction must go this way, क्योंकि हाँ यहाँ पे hydrogen shift होगा, because there is a bulky group here or something like that. It depends, right? अब तुमको सोचना है. But it must become like that कि हाँ, you get the immediate idea कि हाँ, obviously यहाँ पे negative charge है, वो वहाँ पे migrate करेगा, यहाँ पे double bond shift होगा. It should become very obvious. It is more like mathematics कि you have this, that's why you have this. You have this, that's why you have है तो पॉजिटिव आ ही जाएगा. It's the entire thing. All the products follow trivially from the initial reaction. And you know, like people say that I am good in organic, but actually I don't remember a lot of reactions. If you give me a reaction, I just see the condition and I am able to write the mechanism, because I feel very logical in organic. Obviously there are exceptions. In some places you cannot always do this, but with practice. That's why you need maths, right? So it's like, you know, maths. Figure out the mechanism. So in maths you don't memorize questions, right? You don't memorize the concept in maths. Similarly, I feel for organic. In electronic effects, you don't need to memorize what inductive effect is. You know that something is more electronegative, so it's going to pull electrons, right? In resonance effect, you know that it has extra lone pairs, and if there are vacant orbitals, then it can definitely go to that orbital. You don't need, you know, anything else to memorize there. And that is a very important fundamental concept. level. This is specifically for chemistry. Always think in terms of the electron cloud, because VSEPR, everything is just theory. In the end, सबसे बड़ा है electron cloud. That is like master of everything. Even MOT falls flat in front of that. If you can think, okay, how will the electron cloud look for this molecule? Why do you think we draw benzene circle? The electron cloud actually merges together. You won't be able to tell where the double bonds are. If you see the probability distribution, actually to the quantum mechanical calculation, it becomes a single ring on both sides. The p lobes get scattered in a ring. So if you can imagine that, then it's going to be best for you, because then you won't be able to always give the correct mechanism, but you will get an intuition कि हाँ ये ऐसे ही होगा, क्योंकि like you can imagine कि electron cloud ऐसे change हो रहा है. So we already have now, you know, almost 8 p.m. भैया one last question. Yeah. भैया फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स करने के बाद केटीजी और हीट ट्रांसफर मैंने नहीं किया, तो मेरे को वो करना चाहिए, या फिर मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेस, एसी, ये इन चैप्टर्स में ध्यान देना चाहिए? The important topics I told, the PDF I have given. Yes भैया, there was modern physics. हाँ, मॉडर्न फिजिक्स था, उसके बाद ये तो नहीं था ना केटीजी, या था? नहीं याद है वैसे, नहीं था ना, तो उसको देखो, अगर नहीं है तो छोड़ दो. नहीं, मुझे लगता है अगर ऑप्शन है फ्लूइड से तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि टीजी कर ले, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड. भाई फ्लूइड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते. फ्लूइड्स और एसी बोल रहा था भैया, मैंने फ्लूइड्स और एसी नहीं किया भैया. बायोलॉजी का मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ, तो बायोलॉजी का वो बायोटेक्नोलॉजी पार्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए? एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का मैं देख रहा था,
वो क्वेश्चन बाहर से बहुत आ रहा है, वो जो प्लाज्मिड का ऐसे लाइक। वो क्वेश्चन बाहर से नहीं है, वो क्वेश्चन बाहर से नहीं है, वो बस एनसीईआरटी में तुम लोगों को कौन बस बताया हुआ है कि वो चीज क्या है, वो लोग उस चीज को अप्लाई करके पूछ रहे हैं। प्लाज्मिड का वो जो रूबिक्स 3-2 ये था, बट उसका अलग था क्वेश्चन उधर। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर वो लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ और दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाहर से हो गया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुम्हारा को क्या चीज समझना चाहिए कि वो कहाँ कट कर रहा है, वहां पे कुछ भी बाहर का नहीं है, वो लॉजिकल क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर तुम लोग को याद भी नहीं है कि क्या है, मतलब कॉन्सेप्चुअल अगर तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग है तो तुम लोग उस क्वेश्चन को सबसे आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो वो बाहर से नहीं है। ठीक है, चलो सेशन को एंड करते हैं। और अखिल भैया मेरा एक तो क्वेश्चन आपने था बोला आपसे। कि केटीजी और हीट ट्रांसफर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए कंपेयर टू एसी और फ्लूइड मैकेनिक्स में। ट्रांसफर को नहीं, केटीजी एंड एसी ये दोनों कर लो। हाँ, फ्लूइड से बोला कि केटीजी को ज्यादा देना चाहिए। हीट ट्रांसफर दोनों छोड़ सकते हो तुम, क्योंकि दोज आर आइसोलेटेड टॉपिक्स, राइट? बिकॉज वहां का कॉन्सेप्ट कहीं और यूज नहीं होता। बट एसी एंड केटीजी दे एक्चुअली आर यूजफुल, लिंक्ड है ये सब। फ्लूइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। टॉरिसेलिस लॉ तक कर लो, बर्नौलीज इक्वेशन, इससे ज्यादा नहीं आता। भैया मेरा अखिल भैया से एक क्वेश्चन था एक्चुअली। हेलो भैया, मैं विवेक, मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था लाइक मैथ्स में जो है मुझसे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट एज अ बायो को चुना है। तो बायो में लाइक पहले भी मतलब सेल्स और जेनेटिक्स और अभी मैंने इकोलॉजी वगैरह ऐड किया है अपने उसमें। तो इतने चैप्टर काफी होंगे या इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा ना? क्योंकि नहीं एक्चुअली देखो यार, जितना करो अच्छे से करो ना। तुम मैथ वाले बहुत ज्यादा बायो करने के चक्कर में मत जाओ, फिर वो नेगेटिव मार्किंग ढेर सारी करके आओगे। जो करो अच्छे से करो। तो क्योंकि जितना इकोलॉजी को पहले एक्चुअली किए पढ़ने अगर में मुझे यार लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा एडिशन मत करो, इसीलिए मैं बहुत सोच के बोला हूँ कि ऐसा ही चैप्टर ऐड करो। बस इकोलॉजी में कह रहा हूँ, इकोलॉजी कर लो, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, इसलिए कर लो। और नए बहुत एक्चुअली ज्यादा चैप्टर का एडिशन मत करो, ये टाइम नहीं है अभी बहुत ज्यादा नया कुछ करने का। एक्चुअली पहले ही जो मैंने जेनेटिक्स आता कर है रखा है। उसको और अच्छा करना है। हाँ, जेनेटिक्स पहले मतलब प्रीवियस ईयर वाले में पहले तो किया है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को हाँ रिवाइज कर लो। जो पहले किया है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो रिवाइज करके उसको अच्छे से करके आ जाए। फिर अगर कुछ नया ऐसा कर रहे हो तो ऐसा कर लो कि उसके क्वेश्चन बन जाए। अब यहाँ किसी तरीके से एनिमल फिजियो, प्लांट फिजियो कोई चैप्टर लास्ट मोमेंट तक पढ़ के गए, उतने पहली बार पढ़ रहे हो, दिमाग में उतना स्टोर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? करोगे भी तो एग्जैक्टली नेगेटिव करके आओगे। मैंने इसलिए आपसे पूछा। एक्चुअली इकोलॉजी को भी मुझे मतलब पढ़ने और नोट्स बनाने में मुझे 2 दिन लग गए, तो मेरे पास अगर इतना टाइम भी नहीं है। अच्छा अभी लगेंगे कि लग गए, तुम बना नहीं नहीं, चुके हो? लग गए बन गए और मेरे को हो ही गया। तो अब बस अब अब वही एक बार और कर लो, फिर रिवाइज कर लो, हो जाएगा तब तक, और इसीलिए मैं ह्यूमन बोल रहा हूँ। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला जो चैप्टर रहेगा। हाँ, उसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर को अभी चालू भी नहीं किया है। नहीं किया है। तो देखो पहले इकोलॉजी के तुम देखो, जो चैप्टर करो ना उसके पीवाईक्यू देखो तुमसे बन जा रहे हैं कि नहीं। मतलब जो पीवाईक्यू अटेंड करते हो उस चैप्टर के बन जा रहे हैं कि नहीं, ये जरूर ठीक है चेक करना। ठीक है भैया, अच्छा, थैंक हमारी यू। क्लास शुरू हाँ होगी। हाँ, तो हम सेशन को एंड करते हैं और कुछ भी। अच्छा भैया एक लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। मेरे ना 50 नंबर आ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 50 गया है मॉक में, तो होप रख सकता हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, मॉक पीवाईक्यूज रखो, बहुत सॉरी अच्छा पीवाईक्यूज स्कोर है, में, अच्छा पीवाईक्यूज भैया स्कोर है। और एक होप बात और, रखो, होप तो सीयूईटी का लास्ट तक फॉर्म रखो। भरना चाहिए। हाँ भाई, भर सको तो भर दो। हेलो भैया, भैया आज ही तक लास्ट डेट है तो समझ नहीं आ रहा है भरे कि नहीं। भर दो यार, अरे अगर सोचो मत, डॉक्यूमेंट्स दो है तो फॉर्म ऑनलाइन ही भरने तो में भरना कितना है, रुपये 10 चला मिनट जाएगा। भर जाएगा, आधे घंटे में। गरीब गरीब नहीं हो जाओगे एक फॉर्म भर के कोई भी। भर दो, एक ऑप्शन ही रहेगा। हेलो भैया, मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में कौन सा इजी रहेगा? मतलब मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये दोनों में से कोई एक ही पढ़ूंगा मैं, तो कौन सा क्या वाला किसका पहले करूँ, मतलब फिजियोलॉजी, करूँ? मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियो, प्लांट मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में कौन सा फिजियोलॉजी बताओगे? मतलब मतलब प्लांट, फिजियोलॉजी अगर प्लांट मतलब प्लांट से क्वेश्चन आया तो प्लांट ही करूंगा। एनिमल टिश्यू प्लांट वाले, किया हुआ है बायो वालों को लेकिन याद नहीं होती सारी चीजें। तुम पीसीएम वाले होके लास्ट हफ्ते में कहाँ से सब याद कर लोगे? इतना उसमें याद करना है ना, हर एक का फ्लोरोसेंस और सब। प्लांट मॉर्फोलॉजी तो करना मत, तुम छोड़ दो।
और फिजियोलॉजी भी प्लांट की पहले नहीं किए होगे तो इतना आसान नहीं है, लास्ट मोमेंट में समझ जाओगे। ये बायो वालों को भी टाइम लगता है इसको करने में, तो तुम पीसीएम वाले हो मत करो, एनिमल फिजियोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर लो, जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वो कर लो बस। अच्छा ठीक है, मतलब प्लांट कोई का जो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। फोटोसिंथेसिस पढ़ो या छोड़ दूं, क्या? मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है सिर्फ यही दोनों वेटेज हाई रखते हैं यहाँ लिखा हुआ है है। वेटेज, लेकिन उतने बड़े भी हैं, उनको करना इतना इजी नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन समझना है। बायो वालों को दिक्कत आती है, तुम तो पीसीएम वाले हो तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन देखना होगा ना कि पर यूनिट टाइम में तुम्हारा आउटपुट कितना आएगा, उस हिसाब से बहुत ज्यादा वो टाइम लेंगे तुम करने में। इतनी अच्छा जल्दी अच्छा फिजियोलॉजी का कोई ये बहुत बड़े चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, इनको ऐसे नहीं तुम जल्दी से कर लोगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। भैया Thank you जो भैया। केमिस्ट्री और फिजिक्स का इम्पोर्टेंट डाले हैं उतना करने से हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। बाकी और चलो मैसेज तुम कर लोग के देना, लिए, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है तुम ही। लोग के लिए जितने भी मैथ वाले हो कुछ बायोलॉजी कर लो, इसलिए तुम लोग को ये एक चीज सोच रहा था, ये कर देते हैं, तुम लोग को बायोलॉजी क्लास और डाउट क्लियरिंग ग्रुप का एक्सेस दे देंगे, जितने भी एवरीथिंग कोर्स वाले हो। बायोलॉजी तुम लोग कर लो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाएंगी प्रीवियस भी। तो जितने भी आईआईटी एवरीथिंग कोर्स में हो तुमको बायोलॉजी का एक्सेस दे देंगे, ठीक है। कम से कम मैथ वाले कुछ अपना बायोलॉजी स्कोर इम्प्रूव कर लेंगे उससे। चलो ठीक है ना, सेशन को एंड करते हैं। गुड नाइट। हाँ थैंक यू भैया। ठीक है।